अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा। वेलकम वेलकम हार्टी वेलकम, वेलकम वेलकम हार्टी वेलकम, वेलकम वेलकम हार्टी वेलकम, वेलकम वेलकम हार्टी वेलकम। Om Shanti. Jenna Ben, Om Shanti, brothers. How are Om Shanti, my sister. So nice to be with everybody today. okay. Today we are very happy to have you with us. In fact, Oh, I've been a little bit keeping up with you. You kind of stay busy and spreading Baba's message everywhere. That's great. sister, since long we are waiting for you, you know. Around, say, since last 6 months we are waiting for you. We have your great experiences, and today it's a great opportunity for us to listen to your all experiences, your experiences with Baba, your experiences with Dadi, sustenance you got from some seniors. So this is Rushi, and he is from Newfoundland, Canada. And he's translator for you. Basically, he is from Vadodara, and right now he is there in Newfoundland for Baba's service there. And he is serving under Sister Judy Johnson, Halifax. Wonderful. It's a Judy sister's reason, and he is connected with Judy there and Eric Bai. Okay, so today he is translator for you. Okay, so sister, please, you may start now. Thank you so much. Om Shanti, everybody. Let's take a moment of silence, and it's an intentional silence. For me, silence is where I'm able to not have any waste or negative thinking. No waste thoughts at all. None. So सिस्टर जेना का ये कहना है कि सभी शुरू करने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, और उनके लिए साइलेंस का मतलब ये है कि कोई भी वेस्ट थॉट हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। बस साइलेंस मतलब पूरी तरह से साइलेंस में बैठ के शुरू करते हैं। After such a powerful Murli today, how can we not spend a whole day in Baba's remembrance? आज की इतनी पावरफुल मुरली के बाद पूरा दिन बाबा की याद में ही बीता होगा। Baba gave me and all of us a very clear explanation of what love is. बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छे से समझाया है कि प्रेम किसे कहा जाता है। Pure love. प्योर प्रेम, पवित्र प्रेम किसे कहा जाता है, ये आज की मुरली में बाबा ने हम सबको समझाया है। So I don't think I'm going to share anything with you that you haven't heard from all the Maharatis before me. तो सिस्टर जना हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं शेयर करने वाली है जो हमने पहले महारथियों द्वारा ना सुना हो, जो भी क्लासेस हुए उनमें। I think we should just have fun and tell stories. उनके हिसाब से बस हमें यहाँ खुशी बांटनी है, खुशी से ये क्लास चलाना है और आनंद में रहना है इस वक्त। For example, one of our contacts, she was the strategic director for the military in America, and she made this for me. तो सिस्टर जना के संपर्क में एक आत्मा है, वो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री के साथ वो कनेक्टेड है, और उन्होंने ये जो अभी उन्होंने दिखाया वो उनके लिए बनाया हुआ है। So she was in Peru, and she wanted to make a sign which said Sister Jenna, but the person thought she meant Pister Jenna. So just to give you an idea of my story, it's very entertaining. वो जो बहन है वो पेरू में है, और उन्होंने ये बनाया था, वो लिखना चाहते थे सिस्टर जेना, लेकिन वो पिस्टर जेना उन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर। Can you imagine somebody respects you and loves you and honors you, comes and goes, I got you a gift, Pister Jenna. It was just, what can I say? I had to receive it with love. ये थोड़ी सी फनी बात है कि लिखना कुछ और जाते थे और लिखा हुआ कुछ और है, लेकिन उन्होंने प्रेम से इसको स्वीकार किया है क्योंकि बड़े प्रेम भाव से दिया गया था ये।
I mean, if I had ever allowed my ego to come up, it would not be at that time because she gave it with so much love. But she knew they made a mistake. Instead of saying Sister Jenna, they said Pister Jenna. So I have a अगर new name. अगर कहीं भी थोड़ा-सा अहंकार आ जाए इस बात में, तो ये स्वीकार नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उसके पीछे का प्रेम भाव देखा कि कितने प्रेम से ये चीज़ लाई गई है। उन्हें भी पता था ये मिस्टेक हो गई है, सिस्टर की जगह पिस्टर हो गया है, पर उन्होंने प्रेम भाव देख के उसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया। Mm. So let me give you a little bit of update of what's been happening with us here in Washington, D.C. तो अभी सिस्टर जेना हमें वहाँ की अपडेट्स देंगी कि वहाँ से वॉशिंगटन डीसी में इस वक़्त क्या हालात है और क्या चल रहा है। So on February 25th, we were told to vacate Baba's home that we were living in for 15 years. 25 फरवरी को उनको ये नोटिस मिला कि अभी आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी जो पापा का घर है, जहाँ पे वो 25 साल से रहते आए हैं। And they gave us less than 2 months to find a new place. और ऊपर से उन्होंने 2 महीने से भी कम का वक़्त दिया इस जगह को खाली करके दूसरी जगह ढूँढने के लिए। We were supposed to buy the house firsthand, but he got somebody to give him 1.5 million in cash. We didn't have that. सो हमें उन्हें वहाँ पे घर परचेज़ करना था, लेकिन उसके लिए 1.5 मिलियन कैश की ज़रूरत थी और उस वक़्त उतना पैसा नहीं था। Can you imagine in the middle of a pandemic, your landlord tells you to get out in less than 2 months, and you're not moving one person, 2 people, 3 people, you're moving a whole community. So let me tell you this, I had full faith in Baba. तो ये इमेजिन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। 25 साल से आप एक जगह पे रह रहे हैं, वहाँ का लैंडलॉर्ड आपको बोलता है आप 2 महीने के अंदर इस वक़्त ये जगह को खाली कर दीजिए और इस वक़्त जो हालात है, उस समय नया घर परचेज़ करने के लिए जो रकम चाहिए वो भी नहीं होती है। तो सिस्टर जेना का ये कहना है, लेकिन उनको बाबा पे पूरा भरोसा था और वो फिर आगे बढ़े। What would you do if you were in that position? तो आप सबसे एक सवाल है, अगर आपके साथ ऐसा किया जाए, ऐसा हो जीवन में, तो आप क्या करेंगे उस वक़्त? So I had full faith in Baba. But did I have full faith in me? तो सवाल उनका ये है कि उनको बाबा पर पूरा भरोसा था, लेकिन क्या उनको अपने आप पर पूरा भरोसा था? ये उनका सवाल है। But I know that Baba couldn't work through me if I had problems with me. सो जो बाबा है वो हमसे काम नहीं ले सकते हैं अगर हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है, ये उनका कहना है। At first, I was so disappointed with humanity. I was disappointed with the landlord. I was disappointed with drama. Like, come on, not now, drama, not now. सो जब उन्हें ये खबर मिली, तो वो थोड़े से डिसअपॉइंट हुए इस बात को लेकर, क्योंकि 25 साल से आप एक जगह पे रह रहे हैं और आपको तुरंत कहा जाता है आप 2 महीने के अंदर खाली कीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये इस वक़्त ड्रामा में ये क्यों हो रहा है? इस वक़्त नहीं, बिकॉज़ हालात इस वक़्त बहुत खराब है। तो इस वक़्त ये नहीं होना चाहिए। थोड़े से दिल शिकस्त ज़रूर हुए थे एक बार। I called my friends, some seniors, who were in Gyan for 40, 50 years, 60 years. I'm like, I'm done. After all of this effort, this is what I get. तो सिस्टर जेना ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, जो 40-50 साल से ज्ञान में थे, उन सबको बात को फ़ोन करके उन्होंने कहा, ये बहुत हो रहा है, इतनी मेहनत के बाद ये मिल रहा है कि 25 सालों के बाद मुझे फ़ोन आता है कि आप 2 महीने में जगह खाली कर दीजिए। So I'm sharing with you my thoughts. तो इस वक़्त अपने जो उस वक़्त के जो उनके थॉट्स थे, उस वक़्त की जो माइंडसेट थी, वो शेयर कर रहे हैं सिस्टर जेना हमारे साथ। And in the middle of those thoughts, there is a deep, deep feeling, Baba, this is your task. I know you're going to make things right. उस वक़्त उनका ये माइंडसेट था कि बाबा ये आपको ही करना है और आप ही कर सकते हो, मेरे बस में नहीं है और आप इसको सही से कर लोगे, ये मुझे पता है। So being the person that I am, Baba has put courage in me. So I don't get scared very easily. That same night, I went online to look for real estate.
तो जिस तरह का व्यक्तित्व है सिस्टर जना का, वो बहुत ही हिम्मतवान है। वो छोटी-छोटी बातों में डर नहीं जाते हैं। तो जैसे उनको ये पता चला, दिल शिकस्त ज़रूर हुए शुरुआत में, लेकिन उसी रात को ऑनलाइन सारी वेबसाइट पे रियल एस्टेट वगैरह सब देखने के लिए वो उन्होंने काम शुरू कर दिया। The second day, I hired a realtor. The third day, Brother David went searching online. The fourth day, I went to look at 4 places, and one of them is Baba's home that we're in now. तो 4 दिनों में उन्होंने ढूँढ लिया बाबा का नया घर। दूसरे दिन उन्होंने रियल्टर को हायर कर लिया, जो रियल एस्टेट ब्रोकर होता है। तीसरे दिन ब्रदर डेविड है, उन्होंने जगह ढूँढना शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया। और चौथे दिन बाबा का सेंटर तैयार था इस वक़्त जहाँ पे वो बैठे हैं। And the moment I drove up to Baba's place, I could feel Baba and the Brahmins here. I said, wait, last Kalpa we were here. I could feel it that clearly. तो जैसे इस जगह पे उन्होंने वो आए, उनको ये फीलिंग आई कि यही जगह है। उनको वहाँ पे बाबा की महसूसता हुई, उनको ये महसूसता हुई कि पिछले कल्प में यही जगह थी और इसी जगह पे बाबा का कार्य आगे बढ़ना है। Long story short, we got to come into the house. We were not invited, but the owner came out and met us, and they let us in the house. We walked around. It has 9 bedrooms, 3 kitchens, 7 acres, and it's in a private property. And I said, Baba, we were here before. We were here. तो जैसे ही वो जगह देखने गए, वो उस वक़्त इनवाइटेड नहीं थे, लेकिन ओनर आया वहाँ पे, ओनर ने उनको एक्सेस दिया, वो पूरा मकान उन्होंने घूमा। इस मकान में 9 बेडरूम है, 3 किचन है, 3 एकड़ में शायद बना हुआ है। और जैसे ही उन्होंने ये देखा, उनको ये महसूसता हुई, जैसे उन्होंने आगे कहा कि बाबा यही जगह है। So, one of my instruments, Sister Geeta, who happens to also be my Lokik mother, and was instrumental in inspiring me to come to Gyan. She now has a very severe case of dementia. But Baba's vibrations and Baba's energies in her. Would you believe when we were leaving, touring this house, Sister Geeta said, we've slept here before. तो सिस्टर गीता एक और इंस्ट्रूमेंट सिस्टर है वहाँ पे, और इनके लौकिक मदर भी है। उन्होंने ये यहाँ पे इस जगह को देखते ही कहा कि हम यहाँ पे रह चुके हैं पहले। It's amazing. When she said that we've slept here before, I knew this was Baba's home. Now I had to raise $1.6 million, and I only had $1. उन्होंने इस जगह को देखते ही कहा कि यहाँ पे हम पहले रह चुके हैं, यही बाबा का घर बनना है, लेकिन अब एक टास्क ये है कि मुझे $1.6 मिलियन खड़े करने हैं इस जगह के लिए, और मेरे पास सिर्फ $1 ही है। And can I tell you, I didn't even think where that money would come from. I was like, I'm the last instrument that would ever ask anybody for a penny. The last instrument. I will go to your house. I'm not expecting you to give me an envelope. I just want to be with you. So now I have to find $1.6.9 million. I go, oh, that's going to be fun. तो सिस्टर जैना को जब ये पता चला कि उनको 1.6 मिलियन की जरूरत है इस मकान के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं आखिरी इंस्ट्रूमेंट होंगी जो पैसा इस तरह से रेस कर सकती हूँ। मैं कहीं पे जाती हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि मुझे कहीं से कोई कवर मिले। मैं बस जाती हूँ, समय देती हूँ, उनके साथ आनंद लेते हैं, हम मिलते हैं, लेकिन कभी ये आशा नहीं होती है। तो मेरे लिए ये टास्क है कि मुझे 1.6 मिलियन रेस करने हैं। So I turned to about 10 or 15 Brahmins that I know are very close, and their hearts are only for Baba. And those were the Brahmins that helped to put the down payment on this property that moved us in 3 weeks. We moved into this new house in 3 weeks after we were told to move out of Baba's old house. तो उन्होंने 10 से 15 ऐसे ब्राह्मण को संपर्क किया जिनको उन्हें पता है कि उनका हृदय से, दिल से बाबा के साथ है, पूरे मन बुद्धि से समर्पित है। उन लोगों को उन्होंने संपर्क किया और सभी ने मिलकर डाउन पेमेंट जितना अरेंज कर लिया, और 3 वीक में वो इस बाबा के नए घर में वो मूव हो गए, 3 वीक में। And I'll tell you this, everybody, Daddy Gulzar had just passed.
So I gave the agreement to the owners on the day of Daddy Gulzar's last offering of bhog. I signed the lease for the contract of the new house on Daddy Janki's first year anniversary. And the following week, we were moving in Baba's new place called Om Shanti Village. सो इस मकान का जो पहली फाइनलाइजेशन हुआ था वो दादी गुलजार का जब पहला भोग था उस वक्त हुआ था, और जो इस मकान का लीज साइन हुआ है वो जानकी दादी के पहले एनिवर्सरी पर हुआ है, और जब उसके नेक्स्ट वीक में इस मकान के अंदर इन लोगों ने मूव कर दिया है बाबा के नए घर में. The real estate agent, everybody was saying, how is that possible? Somehow the owners, their intellects were merged and there was so much love for God. We made everything work and it was magical. So जो रियल एस्टेट एजेंट था उसको भी ये बात से बहुत अचंभित हो रहा था कि इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि ओनर्स को कई बार बाबा टच करते हैं और ये बहुत इजीली सारी चीजें हो जाती है. Exactly. So I tell you this story because it's Baba's magic. Today's the first day we're opening up the center after lockdown. ये कहानी इसीलिए जैसे सिस्टर जना ने हमारे साथ शेयर की क्योंकि बाबा की मदद के बिना बाबा एक तरह से ये चमत्कार है जिस तरह से हुआ है, जिस टाइम में ये हुआ है, और आज पहला दिन है कि सेंटर इन्होंने ओपन किया है लॉकडाउन के बाद. So all Brahmins in Washington are coming to a new center today, and it's been a great day. I wanted to take you on just a little quick tour. Is that okay? तो पहला दिन है कि वॉशिंगटन डीसी के सारे ब्राह्मण सेंटर पे आए हुए हैं और इस वक्त सिस्टर जना हमें बाबा का नया मकान जो घर है वो दिखाना चाहते हैं. So this is where Sister Jenna is. Then I'll take you to Baba's room here. There's still work going on. So we're still doing, you can see Baba's room here. And this is the living room. Two dining areas here also. Then there is kitchen. Just showing the kitchen. Kitchen here. So this is one kitchen and there was one upstairs. And there's a third kitchen also, but that's, I think, getting ready still. And, this is actually the entrance. This is the front yard. The this is some parking vehicles. So there's two driveways. One is here, one is here. So there's some construction still. This is it. Here, it's beautiful in the morning. The sun rises here. Okay. I think that was a brief I'll just show the backyard and I take you back to Sister Jenna. This is the backyard. Where the trees are, property goes beyond the trees. All right.
Okay. There is actually a peacock also in one of the enclosures. Yeah, it's 9 years old, the peacock. So that was a brief tour. We go back. We go back here. Hope you enjoyed the short tour. Yes, everybody did. Thank you. Thank you. Om Shanti, how was that? It was amazing. Wonderful. Did you enjoy that? It was live, right? It was, It's the magic of Baba and victory of your courage. Bye. I'll tell you that when I spoke to some of my seniors and I said, come on, I've been, hear what I told them, I'm such a good Brahmin. And sometimes the drama does things for you, not to you. And the it's to drama. move, sorry. Sorry. It's to move you closer to Baba. It's just to move you closer to Baba. Because I had created a comfort zone, no? When you're in one place for 15 years, we have the 2 meditation museums. Everything is closed down. I'm only doing online. Baba had to bring up my potential and my capacity, and he did. So कई बार सिस्टर जना का ये कहना है कि ड्रामा जो है आपके साथ नहीं करता, आपके लिए करता है कुछ ना कुछ। और ये जो हुआ है उसने बाबा का इतना बड़ा सेंटर जो यहाँ पे अभी आप सबने देखा ये खड़ा किया है, तो ड्रामा में ये जो राज था ये नहीं हुआ होता तो ये बाबा का सेंटर भी इस वक्त नहीं खड़ा हुआ होता। So how are you all doing? What's happening for you? आप सबकी खबर पूछ रही हैं सिस्टर जना, आप सब कैसे हैं? How are you? We all are okay here. Are you comfortable with the setting? Are you comfortable with doing online programs? Maybe your centers are opening up now. I don't know. But are you okay? आप सबसे पूछा जा रहा है आप सबका माइंडसेट इस वक्त कैसा है? सभी के इस वक्त उनके हिसाब से वहां पे सेंटर शायद खुलने लगे होंगे, उनको इस बात का पता नहीं है खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से शायद खुल रहे होंगे। तो आप सब इस वक्त जो ऑनलाइन जो नया युग चल रहा है, पूरा ऑनलाइन युग, उस सब से आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप सभी से ये सवाल है उनका। Sister, all centers here in India are closed right now. Nothing is open here. But this online system is new for Indians. For Americans and Canadians, it's routine. It's not new for you, but of course, it's totally new for Indians. And now, since last 1 year, we are using this. So here we are used to it now. Yeah, okay, good. We are 1 year June baby. We are 1 year June. Happy birthday. I ask you that question because the 1.5 years of lockdown, being in a whole new environment, has everything in me different. 1.5 साल जो लॉकडाउन का हुआ है, उस वक्त जिस तरह से माहौल चला है, तो ये सवाल सिस्टर जना ने इसीलिए सभी से पूछा है कि अंदर सबके क्या स्थिति चल रही है, सब कुछ अलग चल रहा है इस वक्त, क्योंकि ये जो परिस्थिति है वो सबके लिए नई है। It seems like a small thing, but going to the bathroom is different. Going to the kitchen is different. Going left feels different. Going up is different. Everything in me is getting renovated. Everything inside is getting renovated. And I have only one place in me that I feel comfortable in, and that's with me and Baba.
कहने सुनने में छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन ये 1.5 साल जिस तरह से बीता है उसमें सब कुछ काफी कुछ बदल गया है। जैसे हम उठ के बाथरूम जाते हैं उसमें भी फर्क आ गया है, हम उठ के कहीं पे भी जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हर बात में थोड़ा बहुत फर्क आ गया है। लेकिन एक बात में जहाँ फर्क नहीं आया है वो हमारे और बाबा के संबंध में कोई फर्क नहीं आया है, क्योंकि 1.5 साल जो लॉकडाउन में बिताया गया है उसमें हर एक एक्ट जो हो रही है वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से हो रही है, हर चीज नई लग रही है, अलग लग रही है। लेकिन हमारा जो बाबा के साथ संबंध है वो और गहरा होता जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। So 2 weeks ago, I said, that's it. This is enough. I cannot stand seeing the place out of order. The contractors were not good. There's dust everywhere. Everything is piled up on each other. The place was to be ready by April 16th. It wasn't, so we had to put all the furnitures around it. And for the first time, I went, oh, that's what Rama is doing to us. Rama has us renovating sanskars. 2 वीक पहले की बात है, सिस्टर जैना ने जब देखा और उनको लगा कि नहीं अब यह बहुत हो गया, क्योंकि हर चीज जो थी वो अपनी जगह पे नहीं थी, सारा कुछ मेस्ड अप था। 16 अप्रैल को ये तैयार हो जाने वाला था लेकिन नहीं हुआ। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने काफी डिले कर दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो आपने जगह देखी उन्होंने अपने हिसाब से अपने थोड़े ही समय में बनाई हुई है, लेकिन वो जगह को देखकर उनको ये महसूस था हुई कि ये जो इस वक्त मकान के साथ हो रहा है यही ड्रामा हमारे साथ कर रहा है। हम सब भी इस वक्त रेनोवेट हो रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। Exactly. So I realized that when we first come to Baba, how many of you felt excited about coming to Baba? Hands up. तो आप सबसे ये सवाल है कि जब आप बाबा को मिले तो उसका आपको कितना एक्साइटमेंट था, आप कितने उसके लिए उत्सुक थे, आप जब नए नए आए तब आपको क्या फीलिंग थी, कितना एक्साइटमेंट था, ये सब। अगर जिसको बहुत एक्साइटमेंट था वो हाथ उठाए अपना। How many of you? Everybody? Who you go, oh my gosh, I'm a long lost deity. I'm going to become a deity. Oh, Baba, Baba, Baba. And you was just Baba. You didn't care about anything else. Remember? तो ज्ञान में आते ये संकल्प कितनों को आया कि मैं देवता बनने वाला हूँ, मैं वही ब्राह्मण आत्मा हूँ। ये संकल्प से कितने लोग उछल पड़े हैं, सब हाथ उठाए अपना। You didn't know that your renovation would have taken years. आपको नहीं पता था कि आपका जो रेनोवेशन है उसमें सालों लग जाने हैं। It's so interesting. Like everywhere you would go inside of your Atma, you more of Baba's love need to be put here. Relationship needed Baba. Finances needed Baba. Your mental state needed Baba. Your health needed Baba. You didn't know your renovations was going to take so long. तो जिस हर जगह देखो, हर जगह बाबा का इन्वॉल्वमेंट आता है हमारे जीवन में, तो हमें ये नहीं पता था कि इतने साल लगने हैं। जब हम नए नए ज्ञान में आए कि हमारे रेनोवेशन को इतना समय लगना है। सो मकान के रेनोवेशन से सिस्टर जेना ने आत्मा के रेनोवेशन को बहुत अच्छे से कंपेयर किया है यहाँ पर। Can I tell you something? Every day I would go down from Baba Bhavan and all I saw was dust and things piled up on each other, and I just couldn't look at it. And at that moment, I said, Baba, you want me to look at my dust. You want me to remove this dust. I have to remove this dust. तो हर रोज जब भी वो नीचे जाते थे, मकान को देखते थे, सेंटर को देखते थे, उस वक्त हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई थी, हर एक चीज एक के ऊपर एक रखी हुई थी, और वो यही सोचते थे कि ये बाबा आप चाहते हो कि मैं इसको इस तरह से हटाऊं, मैं इसको अपने इनिशिएटिव लेके मैं इसको ठीक करूं। I was waiting on the contractors to finish the job and get it in order, and they weren't doing it. So कॉन्ट्रैक्टर्स का वेट कर रहे थे कि उनको इस चीज के पैसे दिए गए हैं, उनका ये काम है, तो वो अपने हिसाब से इस काम को करे, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो। Do you know why? क्या आप सब जवाब दे सकते हैं वो लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे अपने हिसाब से जो उनको करना चाहिए था? Because Rama wanted to reveal, you have to change. You have to do the work. You have to clean up. And when you do, you will celebrate like the gopis.
क्योंकि उनके हिसाब से ड्रामा उनसे खुद से करवाना चाहता था ये सारे काम, क्योंकि जब आपने खुद ये सब किया होता है तो उसका उमंग उत्साह कुछ अलग ही होता है और आप गोपियों की तरह नाचने झूमने लगते हैं। I have picked up so many heavy boxes. I have moved everything around, get everything ready. And when I moved everything out and didn't wait on contractors to do it, everything fell into place. It was like clean and pure, and I didn't have to wait on them. And it's the same thing with you. You don't have to wait on anyone to transform yourself. Just Baba's love will do it. So, जब वो पहले नीचे जाते थे, सारा धूल मिट्टी देखते थे, चीजों को बिखरा हुआ देखते थे, तब वो बहुत परेशान होते थे। फिर उन्होंने ये ठाना कि अब मुझे खुद ही को करना है, मुझे किसी पे कॉन्ट्रैक्टर्स पे डिपेंड नहीं होना है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। सारे जो हैवी बॉक्सेस थे वगैरह सब सिस्टर जना ने खुद ने मिलके सबने ये क्लियर किया, सारी धूल मिट्टी हटाई, सारा मकान ठीक किया और फिर उन्हें बहुत आनंद की महसूसता हुई। और उन्होंने वंस अगेन इसी चीज को कंपेयर किया है मकान के रेनोवेशन से आत्मा के रेनोवेशन को, कि हमें भी अपने जीवन में यही करना है। किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना है कि कोई आएगा, किसी की मदद से ये होगा। हमें खुद से स्टैंड लेना है और हमें खुद ही को परिवर्तन करना है। In Baba's Murli today, Baba says it's God's love that will transform everyone and everything. That's all we need, everyone, is the courage to receive Baba's love, but to also share Baba's love. आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा का प्रेम है जो हर एक आत्मा को परिवर्तन करेगा। तो ये हिम्मत है बाबा के प्रेम को पाने की और बांटने की, जिससे परिवर्तन होगा हमें और सब में। That's it. आज सिस्टर जना हम सबसे इतना ही कहना चाहते हैं और ये बहुत वंडरफुली अगेन मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने जिस तरह से कंपेयर किया है मकान के रेनोवेशन को और आत्मा के रेनोवेशन को, बहुत बखूबी उन्होंने कंपेयर किया है। I've had a beautiful journey. I don't know if you all know this, but I used to own 2 nightclubs before I came to Baba. So, सभी को ये पता है या नहीं, उन्हें ये बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान में आने से पहले सिस्टर जना के पास 2 नाइट क्लब के वो खुद ओनर रह चुके हैं। Today, for a couple of hours, I came to know about this 2 nightclubs. They were the best clubs, the best. So I came to know just before a couple of hours. Did you? Yeah, yeah. So my mother and father are Brahmin teachers in Miami, but I had this dream, I'm going to make my first million by the time I'm 20 something. And, I'm running these 2 very popular clubs. Everybody loves coming to the clubs. And my biggest thing is, what was I wearing that day? And which of my luxury cars I was going to step out of. Oh, I was the queen of body consciousness. सिस्टर जना के पेरेंट्स जो है वो समर्पित रूप से सेवा दे रहे थे, लेकिन उनका ये ड्रीम था कि वो एक बिलियनर बने। उनके पास 2 बेस्ट नाइट क्लब्स के वो ओनर थे। उनका ये कहना था, मैं वेट करती थी मैं अपनी कौन सी गाड़ी में बाहर जाऊं, मैं क्या पहन रही हूँ। तो वो ज्ञान में आने से पहले उनके हिसाब से देहाभिमान के क्वीन थे उस वक्त। Even every year you used to change the furniture. Is it true? Every 3 years. Every 3 years. Okay, every 3 years. Every 3 years, yeah. 3 years you used to change. I have a story. So I'm away in one of these countries, and I was dating the son of the prime minister of that country. And there was a hurricane in Miami. And so Sister Mohini was visiting Miami. And the center in Miami had gotten flooded out and no electricity. And my condo was the only condo that was available. तो इस वक्त एक बात कहना चाहते हैं, जब मिनिस्टर ने पूछा कि आप अपना फर्नीचर हर साल बदलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, 3 साल में बदलते हैं। इस बात पे उन्होंने एक कहानी सुनाई कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का जो बेटा था उनसे उनका मिलना जुलना था, और वो जब मियामी गए थे वहां पे हरिकेन आया था, तो सारी चीजें जो है वो बिखर चुकी थी, लेकिन उनका जो मकान था वो एक स्टैंडिंग था, उसको कुछ नहीं हुआ था उस वक्त, और सिस्टर मोहिनी विजिट कर रहे थे। So, BK Center's pure, white, angelic. Sister Mohini comes into Jenna's apartment and it's black and red Italian furniture.
तो उस वक्त सेंटर जो है बिखर चुका था हरिकेन की वजह से। तो वो जब इस अपार्टमेंट में आए तो सेंटर्स यूजुअली वाइट होते हैं, एंजेलिक होते हैं, बहुत उनमें पावरफुल वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन वो इस अपार्टमेंट में गए, वो पूरा ब्लैक पेंटेड था और पूरा बिखरा हुआ था। So, you know how powerful Sister Mohini is. I was told, she said, scene change, no? That was all she could say. सिस्टर मोहिनी ने एक ही बात की, ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है, that's it. But hear this, while I was in that country, I could feel Sister Mohini's good vibrations. And I was communicating to Sister Mohini through my mind and saying, you can stay as long as you want there, because I wasn't there. So ये उनको इस वक्त जो अलग अलग थे, लेकिन वो अपने माइंड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे और ये बात कर रहे थे कि आप जितना देर चाहो वहां पे रह सकते हो, उस मकान में आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। And the interesting thing was that I had never met Sister Mohini before. और इस इंसिडेंट से पहले सिस्टर मोहिनी से उनका कभी भी मुलाकात नहीं हुआ था। It was amazing, huh? तो ये बहुत ही एक अमेजिंग बात है कि किस तरह से ये मिलना हुआ, किस तरह से बात हुई, एक साथ नहीं थे फिर भी ये कम्युनिकेशन हो रहा था। And we were still able to communicate soul to soul. तो आत्मा से आत्मा की बात हो रही थी उस वक्त, और कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां पे एक हरिकेन आया हुआ था, उस वजह से सब कुछ बिखरा हुआ था। So what happened was, I had this vision of Brahma Baba, and Brahma Baba had just come in this vision like he was behind palm leaves and he was looking through and he said, "Ao Bache, Ao, aren't you coming to heaven?" And I was like, wait, what is that? तो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ है सिस्टर को। पेड़ के पीछे से जैसे ब्रह्मा बाबा झांक रहे हैं और उनको बुला रहे हैं कि आप आइए, आपको क्या सतयुग में आपको नहीं आना है, आप आइए यहाँ हमारे साथ। और उस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है इस वक्त मेरे साथ। I'm like, Baba, I love you. I love the sisters. I can't do BK. I just can't do it. I'm into fancy clothes, luxury cars, dating great men with great futures. I'm into drinking, partying. I love you, Baba, and I love the BKs, but I can't do this. जब उनको ये साक्षात्कार हुआ तब उनका ये कहना था, मुझे ब्राह्मण परिवार से प्यार है, मुझे बाबा से प्यार है, लेकिन मैं ब्राह्मण खुद नहीं बन सकती हूँ। मेरा जीवन बहुत अलग है। मैं नाइट क्लब की ओनर हूँ, मुझे लग्जरी गाड़ियों का शौक है, मेरे कपड़े, मेरा पहरवेश सब कुछ बहुत अलग है। मैं बहुत अलग अलग लोगों से मिल रही हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं बन सकती हूँ। I was like, no way. So I used to get my driver that I had in the country that I was dating, the son of the prime minister, because we had a lot of privilege. And I would collect my friends in the limousine and have the limousine driver take them to BK Center for them to learn Raj Yoga. But I wasn't going to learn Raj Yoga. This is how I was. तो सिस्टर जेना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। वो जब प्राइम मिनिस्टर के बेटे से मिल रहे थे उस वक्त, तो उनका ड्राइवर था, उसके पास लिमोजी गाड़ी थी। तो वो अपने दोस्तों को उस गाड़ी में ड्राइवर को कहते थे कि इनको सेंटर पे ले जाओ, बहुत महंगी गाड़ी थी, उसमें वो लोग अपने दोस्तों को भेजते थे कि आप जाके कोर्स करो, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं बनना चाहती हूँ, मैं नहीं बन सकती हूँ ब्राह्मण, आप जरूर जाइए, मैं ड्राइवर करती हूँ, ये गाड़ी है, आप जाइए सेंटर पे कोर्स कीजिए, बट मैं इसमें नहीं आना चाहती हूँ। Can you believe it? But Do you anyway, believe? Baba kept coming in visions, and then Shiv Baba was calling me, and Brahma Baba was calling me. Then I finally decided to go to Madhaban and meet Baba. I was 24. तो साक्षात्कार कई बार हुए उनको, बाबा ने उनको कई बार बुलाया कि आप आ जाइए, लेकिन उनका जीवन बहुत अलग था। लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे एक बार मधुबन जाना है, बाबा से मिलना है, और उस वक्त उनकी उम्र 24 साल की थी। At the time, I wasn't following all the principles, but I was so in service to helping whatever the yagya needed. But when I went to Madhaban and I met Baba for the first time, I was so scared because all my karmas were coming up in my consciousness.
And as I sat there, I felt like I was not going to make it. And my heart was pounding out of my chest because I hadn't prepared, no? तो जब वो पहली बार मधुबन गए बाबा से मिलने के वक्त, उस वक्त वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो उनका जो जीवन था वो उनको दिख रहा था कि मैं किस तरह का जीवन जी रही हूँ और मैं बाबा से मिलने आई हूँ। उस वक्त उनका हार्ट बीट इतना फास्ट था कि उनको लग रहा था मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं मिल सकती हूँ बाबा से इस वक्त। I think this is how it's going to feel before we go home. If we haven't purified the soul, Baba has said all of your karmas, all the sins that you've performed will come up. So all my sins were coming up in my consciousness, like, you know, when you do a book and you go like that, that was how my sins were like this. And I said, I'm not going to be able to meet Baba. I have to go. And as I'm getting up from Om Shanti Bhavan to leave the hall, Bab Dada enters Daddy Gulzar, and just this happens like, whew. And I sat down. What is that? I go, what is that? And everything disappeared. Everything. सो अपना एक स्टोरी ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो बाप दादा से मिले। जब वो मिलने गए तब जैसे उन्होंने कहा सारा उनका जीवन उनको दिखाई दे रहा था। वो इतने घबराए हुए थे, मैं क्या हूँ और मैं बाप दादा से नहीं मिल सकती। उनको इतनी घबराहट हो रही थी, वो बस खड़े होके बाहर जाना चाहते थे। उसी वक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए और एक उनको इतना गजब का अनुभव हुआ, एक जैसे हवा चली हो कुछ, और सारे लोग वहां पे जो थे वो गायब हो गए। उनको कुछ नहीं देखा, सिर्फ वो थे और बाप दादा थे। और वो खड़े होके जाने वाले थे लेकिन वो वापस से बैठ गए। उनको कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ। I needed that experience because to this day, if for whatever reason there's ever a thought that's wasteful, no, I have proof. God comes. I've got proof. I have proof. God is here. तो उनके हिसाब से वो जो एक्सपीरियंस था पहली बार जब वो बाप दादा से मिले, वो बहुत जरूरी था उनके लिए। क्योंकि आज भी जब उनके दिमाग में कोई वेस्ट थॉट आता है, कोई बुरा ख्याल आता है, तब वो उस एक्सपीरियंस को याद करते कि नहीं, मुझे प्रूफ मिला हुआ है कि भगवान है, भगवान किस तरह से आते हैं, ये मुझे प्रूफ मिला हुआ है। तो किसी भी तरह के वेस्ट थॉट की उनके पास अब जगह नहीं है उस अनुभव के कारण। So we each have a different way in which the drama calls us to Baba. I guess mine had to be that way. I have to tell you, when a lot of the sisters had first met me in Gyan, they say, oh, I only give her 2 years to survive this path. तो जब काफी सारे बहनें इनको मिलती थी तो ये कहती थी कि मैं 2 साल देती हूँ, आप 2 साल या बस ज्ञान मार्ग में चल के बताइए। क्योंकि उनका जीवन बहुत अलग था, वो खुद ब्राह्मण नहीं बनना चाहते थे। तो जब बहनें उनको मिलती थी तो ये टास्क दिया जाता था कि आप 2 साल बस ज्ञान में चल के बताइए। Baba and drama prove them wrong. It's almost 30 years and I've not gone on vacation either. So, बाबा ने और ड्रामा ने उन सभी को गलत साबित किया है जो उनको कहते थे कि बस आप सिर्फ 2 साल ज्ञान में चल के बताइए। सिस्टर जेना 30 सालों से ज्ञान में है और उनके उनके कहने अनुसार वो वेकेशन पे भी कहीं नहीं गए इन 3 सालों में। So here's my thought to everybody, the whole Brahmin family. And maybe it's because I'm half Indian, half Black, maybe because I'm raised in America, but I'm exposed to Bharat. I see the world from भारत से भी उनका काफी प्रेम रहा है, भारत से भी उनका एक्सपोजर रहा है। तो जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, 2 अलग नजरिए से देखा जाता है उनके हिसाब से। be very, very honest with your feelings. अपनी भावनाओं के साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहिए, ये उनका कहना है इस वक्त सभी से कि आप जो महसूस करते हैं उसको स्वीकार कीजिए। No matter what it is you're going through, you must be honest with your feelings to you. Regardless जो भी आपके साथ जीवन में हो रहा है, आप अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहिए, यही वो कहना चाहते हैं And इस वक्त हम when सभी को। you are honest with your feelings, then you can take those feelings to Baba. जब आप अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होते
होते हैं तभी आप उन भावनाओं को बाबा के साथ पूरी ऑनेस्टी से ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी भावनाओं के साथ बहुत ही ऑनेस्टी रखनी चाहिए। What do people want in relationships? They want to feel a sense of safety and trust. They want to feel honest with each other. That's all Baba wants from us, is to be honest with him so he can guide us, he can signal us. Think like this, child. Go here, child. Don't do that, child. Just because of your honesty, Baba will guide you best. किसी भी संबंध में क्या जरूरी होता है, ऑनेस्टी और ट्रस्ट, ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है। तो सिस्टर जना यही कह रहे हैं हमसे कि बाबा के साथ के संबंध में भी हमें ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है, ऑनेस्टी और ट्रस्ट। हम जितना बाबा के साथ ऑनेस्ट रहेंगे उतना बाबा हमको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि ये करना है, इस वक्त यहाँ जाना है। ये सारे जो डायरेक्शंस है वो हमारी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के आधार पे हमको बहुत अच्छे से मिलते रहेंगे। And it takes time to build that level of honesty. Let's start today. Even as you're listening to me, is there resistance in what I'm saying? Is there joy? Is there acceptance? Is there love? Check all of those feelings. If it's love, joy, celebrate. If it's a resistance, see if there's something there that you have to sort through, because resistance isn't the nature of the soul. तो सिस्टर जना यही कह रहे हैं कि इस ऑनेस्टी को बिल्ड करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आज ही शुरू कीजिए, अपनी भावनाओं को पहचानिए। जैसे इस वक्त आप हम इन सिस्टर जना को सुन रहे हैं, तो आप महसूस कीजिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसको पहचानिए। क्या आपको खुशी में महसूस हो रही है, क्या आपको कुछ चीज नहीं पसंद आ रही है, इसको महसूस कीजिए। Every form of resistance is body consciousness. Just leave it. So I'll stop here now, because we could talk for hours. But would anybody like to share anything that they're feeling, or anything purely coming out of you as a result of hearing what I was sharing today? तो सिस्टर जना हम सभी से कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। अगर हम कुछ अपनी भावनाएं शेयर करना चाहें आज सिस्टर जना को सुनने के बाद, उनके अनुभवों को सुनने के बाद हमें क्या महसूस हुआ, कोई सवाल हो किसी का, या कुछ शेयर करना चाहते हो अपने जीवन की बात, तो वो हम सभी से सुनना चाहते हैं इस वक्त। आप में से कोई कहना चाहेगा? प्रदीप भाई कुछ कहना चाहोगे? अशोक भाई आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। Om Shanti Bhai. The way you have shared the experience, it is really fantastic, and we felt very enthusiastic. And you have just got the proof of the God. We are really very impressed with your sharing, with your experience sharing. And whenever you speak like a goddess. The expression you feel like a goddess in the Satyug. The angel, goddess in the Satyug, and they move. They are all expressions. If you don't speak anything and just show your expression, we understood your the way. So it is you are already, and believe that you are going to get first number in the Satyug. So you are very nice. You are very good. The way you speak, really, it is very impressive, and we are also inspired with by your experience. Thank you very much. Thank you, Bhai. I have to tell you that I don't know if it's the pandemic, if it's the move, or it's just the drama. But we have to ask ourselves, am I really a spiritual person? तो सिस्टर जना के हिसाब से वो ये नहीं कह सकते कि ये इस वक्त पेंडेमिक की वजह से हो रहा है, उन्होंने ये सेंटर बदला है, जो इस वक्त नए सेंटर में गए उस वजह से हो रहा है, या ड्रामा में ये क्या चल रहा है। लेकिन हम सबको इस वक्त अपने एक सवाल जरूर करना चाहिए कि मैं कितना आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ इस समय में। Sometimes you get so caught up in this one said this one did this, do you know, this one's like this.
Don't talk to this one. Don't let this one do this seva. That one shouldn't be like that. And after a while, I was looking at things and I said to Baba, is that spiritual? No. तो कई बार हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर देखते हैं कि इसको ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लोग उस वक्त सिस्टर जना बैठ के सोचते हैं कि बाबा क्या ये आध्यात्मिकता है, क्या ये छोटी छोटी बातों में उलझना ये आध्यात्मिकता है। So I'm just working on cleaning out my chit and being as kind, loving, thoughtful, sharing as I can possibly be. तो इस वक्त सिस्टर जना अपने ऊपर यही काम कर रहे हैं कि वो अपने चित्त को जितना साफ रख सके, जितना लविंग केयरिंग बन सके, उतना इस समय में बहुत अच्छा है। I see Brother Subhash has come on from Gyan Sarovar. Shanti, are you here to bomb my session today? What do they call it? Zoom bombing? आप ज्ञान सरोवर में आ जाओ जल्दी, ज्ञान सरोवर, प्लीज कम ज्ञान सरोवर। I tell you, listen to this. Where is your mummy? Mummy. She's lying down. She's got Bring, mummy, call mummy. She has dementia now. One song. Listen to this, everyone. I forgot to share this. Last year, I had the deepest pull. I would literally get emotional and almost start crying. I have to be in Bharat. I have to be in India. And it wasn't just Madhaban, but I just had to be back in India. And it went on for months upon months. And I would cry tears wanting to be back in Bharat. And when I saw what was happening with the pandemic this last month or so in India, I feel that was the premonition that I was feeling that my Bharat was going to go through a massive transformation. So last year की बात है जो हमारे साथ अनुभव शेयर किया सिस्टर जना ने कि उनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही थी कि मुझे इस वक्त भारत जाना है। ऐसी फीलिंग पहले कभी उनको नहीं हुई। उनकी आंख में आंसू तक आ गए कि नहीं इस वक्त मुझे भारत जाना है। और उसके बाद ये जो पेंडेमिक की परिस्थिति चल रही थी, उनका ये स्ट्रॉन्ग विचार है कि ये जो है ये पेंडेमिक जो चल रहा है, इस वक्त जो परिस्थिति चल रही है, ये पूरे भारत को, पूरे विश्व का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही ये परिस्थिति खड़ी हुई है। जेना बहन को तो हमने भेजा है, बाबा ने भेजा है, वो इंडिया वाली है, भारत की है जेना बहन, समझा जेना बहन? योर ओरिजिनल होम इंडिया। सुभाष भाई जेना बहन के चेहरे को देखकर ऋषि बोले ये तो हिंदी जानते हैं ना, इनका ट्रांसलेशन की क्या जरूरत है? उन्होंने नहीं ये हिंदी नहीं जानती है। But everything is good though. Everybody's okay. Everyone's all right there. You have to be careful with this pandemic. America is now opening up, but half the country has been vaccinated. But we're going to watch because we don't know, because now they're opening up. So people are still a little bit cautious. तो अमेरिका जो इस वक्त है आधे से ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ की वैक्सीनेटेड हो चुकी है, तो काफी सारा पूरा अमेरिका इस वक्त ओपन हो रहा है लॉकडाउन में से। लेकिन इस वक्त भी हमें संभाल करने की वहां पर भी जरूरत है, क्योंकि पता नहीं है क्या रिजल्ट होगा, लेकिन ओपन जरूर हो रहा है इस वक्त अमेरिका। So here we have Dr. Jain Bhai. Due to some technical reason, his video is not on. But Dr. Jain Bhai is in his knowledge since Sakar Baba's time and is lucky enough to have sustenance from Sakar Baba. And Sakar Baba gave him, permitted him for their holy marriage. So Dr. Jain Bhai and Champa Bain both are Yugas and they are instrument teacher for us. Dr. Saab, aap bhi do shabd kahe. Oh, good evening from India. From Dr. Jayant and Champa. आपका अनुभव बहुत सुंदर अनुभव है। कहाँ से कहाँ बाबा वैक्सीनेशन करते हैं और हमको क्या बना देते हैं। आज बाबा सारी दुनिया का वैक्सीनेशन करने आए हैं। हम जो है पहले आ गए, जो वैक्सीनेट करा लिया है ये ज्ञान वैक्सीन से,
तो इसमें भी आपका रोल सबसे सुंदर है। कितनी अच्छी तरह से आपने अपना अनुभव सुनाया और कहा नाना नाना करते करते हाँ जी कर दिया आपने। Dr. Saab, she needs translation. हाँ वो है ने अपना ट्रांसलेटर। नहीं ओके हाँ, बहुत दिनों के बाद मिला है। जना डॉक्टर जान ये भाई हमारा लाडला बच्चा है, ये भी बता देना। Dr. Jane, thank you for your compliment. My ये experiences that I share, ट्रांसलेट कर, I know, Ruski is translating my versions. yes, yes. You know, when I share my experiences, I know they seem, they're so beautiful and stuff because they're real. But I'm telling you this, if it wasn't for Baba, I just wouldn't be here. And I wouldn't be this soul that I am today. And I think that all of us as Brahmins keep I don't know what it's going to take, but have a very honest conversation with yourselves, with Baba, and with each other. And you find a whole different personality emerging. उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया है वो इसलिए ऑथेंटिक है, इसलिए सबके दिल तक पहुंचा है क्योंकि उनके हिसाब से बाबा की जो बातें उन्होंने बताई है उनके जीवन का अनुभव है। और इसलिए जब हम ये पूरा अनुभव करेंगे तो हमारे जीवन में भी इतनी पावरफुल परिस्थितियां आएगी। So I think we've spent a lot of time together, right? Right. And we can do a part 2 because you're getting me at a point where there are hundreds of people coming at this particular moment. And this is the first day we opened up for Murli class. We're in a new environment and I'm a little bit like this. People are coming, calling because there's a lot of things. When we designed for this day, we weren't thinking that we were going to be open on this day or having golfing for India. So hopefully we'll have a second time around and we'll do more of a spiritual experience session. I'm working a lot on serving the Avyakt body. तो इस वक्त यहाँ पे सिस्टर जना अपना अनुभव का सेशन यहाँ पे एंड करना चाहते हैं क्योंकि जैसे उन्होंने पहले अपने अनुभव में बताया आज पहला दिन है कि सेंटर ओपन हुआ है, काफी सारे लोग आ रहे हैं और ये प्लान नहीं था कि आज ये के दिन ये करना है, ऑल ऑफ अ सडन ये शुरू हुआ है। तो इस वक्त काफी ऑक्यूपाइड है सिस्टर जना, तो उनके हिसाब से हम पार्ट 2 जरूर रखेंगे उनका, और जहाँ पे वो अपने अव्यक्त अनुभव और ज्यादा हमें सुनाएंगे। Thank you for the offering. Actually, I was about to ask you for the second session and you yourself asked. So thank you. And should we, don't you think we should meditate for 2 minutes and then we will finish? Okay? Yes, yes. Just 2 minutes and then we will finish. So shall I conduct the meditation? Yes. Okay. So I wanted to share with you something that I'm working on. I'm aware of my physical body, but the inner body of light, the inner body is what I want to serve with Baba now. सिस्टर जना इस वक्त मेडिटेशन कंडक्ट करेंगे और वो हम सबको बताएंगे कि वो इस वक्त जिस चीज पे काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो हम सबके साथ उनका ये अनुभव शेयर करेंगे। So take a deep breath in and out. And allow your mind to just surrender in Baba's vibrations. Baba, Baba, Baba. Om Shanti. Om Shanti. Bye.